ओके तो हमारे पास कौन सा है, मई जून 2017 वेरिएंट 32 हैरी होटल्स का केस है। ये वो अटेम्प्ट है जो मैंने खुद पेपर दिया था। ठीक है, तो पहले हम केस स्टडी स्कैन करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द आंसर्स कि हमें आंसर लिखना क्या है। और ये आज जो हम आंसर करने वाले हैं वो किसका आंसर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का आंसर। वी मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ द ह्यूज ग्रोथ इन इंटरनेशनल टूरिज्म। यानी इंटरनेशनल टूरिज्म क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये कौन सा बिजनेस है, होटल का बिजनेस है। यानी इनके पास क्लाइंटेल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इफ वी वांट आवर कंपनी टू कंटिन्यू टू ग्रो प्रॉफिटेबली, अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है, कंपनी। कंपनी है विच मींस या तो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी या तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी। HH Chief Executive Officer, globalization is having a huge impact on tertiary sector businesses such as ours. यानी globalization का impact आ रहा है and the impact can either be positive and either it can be negative. Globalization होता क्या है, resources एक country से दूसरे country क्या हो रही हैं, move हो रही हैं। He was speaking at HH board of directors meeting, यानी अब कंफर्म हो गया कि या तो पब्लिक लिमिटेड है या तो प्राइवेट लिमिटेड है, which had been called to discuss the future strategic direction the business should take. The directors were being asked to analyze two strategic options. हमारे पास दो ऑप्शन थे, और जब भी स्ट्रेटजी की बात होती है ना तो स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म। क्या मतलब होता है, लॉन्ग टर्म। अब दो ऑप्शंस क्या है हमारे पास, एक है इंटरनेशनल एक्सपेंशन इनटू अदर कंट्रीज सच एज कंट्री पी, यानी किसी और कंट्री के अंदर चले जाओ। लेकिन देखो हर कंट्री का कल्चर अलग होगा, लैंग्वेज, पॉलिटिक्स, सोशल, सारे फैक्टर्स अलग होंगे। द अदर ऑप्शन इज अपने 3 होटल्स को ये क्या कर दें, बंद कर दें और उसकी जगह क्या पे बना दें, एक्टिविटी हॉलिडे रिजॉर्ट्स। अभी हम जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने तुमसे बात करी थी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपेंशन की। तो यहाँ पर भी उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपैंड हो रहा है, कम नहीं हो रहा, एक्सपैंड हो रहा है। पहले ये सिर्फ होटल्स के अंदर थे, अब अपने ये 3 होटल्स बंद करके उसकी जगह रिजॉर्ट्स के अंदर आ रहे हैं। तो नाउ दिस बिजनेस विल आल्सो हैव होटल्स एज वेल एज रिजॉर्ट्स। तो इसके लिए हम सेपरेट प्रोडक्ट वाइज या सर्विस वाइज स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एक पॉसिबल सजेशन हमारे पास आ गया। ये क्या करेंगे, दीज वुड एम टू अट्रैक्ट फॉरेन टूरिस्ट दैट विजिट कंट्रीज ही, और ऑलरेडी इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ रहा है। तो अगर ये इसकी तरफ जाते हैं, रिजॉर्ट्स की तरफ, तो इसके पास एक बड़ी मार्केट नजर आ रही है। दूसरी बात, इंक्रीज कंपटीशन, यानी अब ग्लोबलाइजेशन जब हो रही है तो साथ साथ कंपटीशन भी बढ़ रहा है, क्योंकि नए होटल चेन्स आपकी कंट्री के अंदर भी आ रहे हैं। However, easier international movement of both labor and capital is also creating new opportunities for businesses such as HH. यानी जहां प्रॉब्लम्स हैं वहां बेनिफिट्स भी हैं। अब आगे देखते हैं। HH was started 23 years ago, which means क्या है, which means it is a well established business, पुराना और established business है। और ये बात यहाँ पर आप जाके क्लियर हो गई कि कौन सी कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। उनके 35 होटल्स हैं, विच मींस एक बड़ा और एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है इन कंट्रीज, यानी कंट्रीज के अंदर डिफरेंट लोकेशंस के अंदर होंगे, जिसमें से 30 इनके अपने हैं और 5 रेंट आउट हुए हैं। 30 अपने हैं विच मींस कैपिटल इनके पास सिग्निफिकेंट है। इट इज अ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बिजनेस। द बिजनेस इज वेल नोन फॉर ऑफरिंग होटल अकोमोडेशंस ऑफ 4-star क्वालिटी। अब 4-star क्वालिटी, 5-star क्वालिटी, 6-star क्वालिटी, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं जो डिफरेंट सेगमेंट्स को अपील करते हैं, जो अभी तो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन जब हम मार्केटिंग वगैरह का सवाल कर रहे होंगे तो मैं आपसे ये बात डिस्कस करूंगा। 4-star में क्या होता है, क्लीन अकोमोडेशन होती है, फैसिलिटीज अच्छी होती हैं, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस रूम फैसिलिटीज, यानी कॉर्पोरेट क्लाइंट तो आपने क्या कर दिया, अपना मिस कर दिया, जिसको कॉन्फ्रेंस की फैसिलिटीज चाहिए या जिनको अपने एग्जीबिशन वगैरह लगाने हैं, वो सेगमेंट तो आप मिस कर गए। स्विमिंग पूल्स नहीं है और जिम्स नहीं। अब हम आ जाते हैं उस बात के ऊपर जिसके लिए मैंने आपको ये केस खुलवाया है और मैं आंसर लिखवाऊंगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एचएच का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो स्टिल बेस्ड अराउंड द फंक्शनल डिपार्टमेंट्स। जो भी हम पढ़ रहे थे चैप्टर के अंदर, फंक्शनल डिपार्टमेंट्स का मतलब क्या है कि मार्केटिंग की अलग लाइन, फाइनेंस की अलग लाइन, ऑपरेशंस की अलग लाइन, एचआर की अलग लाइन, आपस में कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन नहीं है। जब आपस में कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन नहीं है तो क्या आएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्या आएगा, डिलेज आएंगे। सही। और ये कौन सा है, जो ये वही है जो हैरी ने 23 साल पहले ओरिजिनली बनाया था, which means they have not made any changes. And as you are well aware that business environment dynamic है, जैसे जैसे चेंज होता है उस तरीके से उनको अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे आगे बात करूं तो हुआ क्या, once an overall strategy had been decided at board levels,
departmental directors and senior managers then put into effect the necessary changes within their function. यानी ऊपर डिसाइड होता है और फिर बाद में जो नीचे वाले लोग हैं वो अपने हिसाब से चेंजेस इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं. अब हुआ क्या इस स्ट्रक्चर की वजह से? The recent construction of a new hotel in the capital city illustrated the need for coordination. इसकी जरूरत थी, which means the current structure is lacking coordination between marketing, operations, finance and human resource. सारे डिपार्टमेंट्स में कम्युनिकेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं, जिसकी वजह से क्या हो गया? ड्यू टू कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम्स द ओपनिंग वाज डिलेड. अब देखो आपने ओपनिंग की डेट अनाउंस की होगी, जब वो डिले हो गई तो आपकी ब्रांड इमेज गई, आपने पहले से बुकिंग्स ली हुई होंगी, मामला खराब होंगे. Unfortunately, senior managers in the functional department did not liaise closely. मतलब क्या है? आपस में कम्युनिकेट नहीं किया. The lack of coordination and communication and promotion activities यानी मार्केटिंग का मसला, एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट यानी एचआर का मसला, इन्वेंट्री परचेज यानी ऑपरेशंस का मसला, यानी हर डिपार्टमेंट में मसला है. और सारे मसले कहां पर रिजॉल्व होने थे? बोर्ड लेवल पे. तो कब बोर्ड मीटिंग्स होंगी, कब रिजॉल्व होंगे, कब इम्प्लीमेंटेशन होगी? तो सबसे बड़ा मसला ये स्ट्रक्चर के अंदर आ रहा है, जो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है, जो अब इस साइज के हिसाब से सूटेबल नहीं. ये रिजॉर्ट डेट्स ओपन हो रहे हैं. होटल रिजॉर्ट तो एक ऑप्शन है कि हम जा सकते हैं. Harry and some of his fellow directors are worried that current organizational structure might not be suitable for future business growth. और हमें चेंजेस जो आ रहे हैं उसके हिसाब से अब हमें भी क्या करना पड़ेगा? अब मैं रेकमेंड तो कभी नहीं करूंगा कि तुमने इतना पढ़ा और आंसर लिखो, क्योंकि लेकिन मैंने पढ़ा हुआ है, केस मुझे पता है, और अभी आपको केस का थोड़ा सा आइडिया हो गया है और टाइम हमारे पास 40 मिनट्स का ही सेशन का, तब हम आंसर पे आ जाते हैं. पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक्चुअली आंसर क्वेश्चन है क्या, फिर हम बात करते हैं आंसर पे. 16 मार्क का आंसर है जो अभी हम लिखेंगे. 16 मार्क का आंसर हमें 24 मिनट्स में करना है. Discuss the changes HH should make to its organizational structure to allow for future business growth. इसके अंदर डिफाइनिंग टर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. रजिस्टर्स ओपन करो, पेन्स हाथ में लो, बिस्मिल्लाह करते हैं, आंसर लिखें. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर is organizational structure is the internal framework which shows different levels of authority, and hierarchy, which shows different levels of authority and hierarchy in the organization, फुल स्टॉप. यहां पर मेरे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की 2 लाइनों की डेफिनेशन आ गई. अब मैं थोड़ा सा केस के साथ क्या करूंगा? लिंक करूंगा. फुल स्टॉप के बाद as the case identifies that HH is following the same functional structure which Harry created 23 years ago, and is now creating communication problems and causing delays.
यहां तक हमारा एक इनिशियल इंट्रोडक्शन आ गया। सवाल मुझसे बोल रहा है डिस्कस द चेंजेस जो एचएचओ करने हैं फॉर फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ। फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ में दो ऑप्शन हमारे सामने आए थे, एक एक्टिविटी हॉलिडे रिजॉर्ट आया था और एक आया था एक्सपेंशन इनटू अदर कंट्री। तो यहाँ पर हम एक ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट वाइज स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं, हम मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं, हम डी लेयरिंग की बात कर सकते हैं, हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर सकते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो हम कोई भी एक एक चीज लेंगे, सब भरने की जरूरत नहीं है। तो 16 मार्क्स में आफ्टर इंट्रोडक्शन में 3 पॉसिबल चेंजेस डिस्कस करूंगा। तो आ रहा है ना, अगला पैराग्राफ लिखो। as the case identifies as the case identifies that HH as the case identifies that HH is considering that HH is considering expansion into another country which is country P, which is country P. So HH can develop a geographical structure, can develop a geographical structure, can develop a geographical structure which will individually look after the operations, which will individually look after the operations of country P, and country Z, as both the countries will have cultural and social differences cultural and social differences. So separate geographical structures will allow separate geographical structures will allow for quicker decision making, will allow quicker decision making and avoid delays compared to what HH is currently facing however developing a geographical structure might not be easy as the workers are used to
the functional style, the functional style since a long period, since a long period. ये एक पॉसिबल चेंज हो गया. अगला अगला पैराग्राफ लिखते हैं. The next growth option, the next growth option, the next growth option that HH can implement is the matrix structure, is the matrix structure as it will ensure, as it will ensure interdepartmental communication, as it will ensure interdepartmental communication, interdepartmental communication, as the holiday resorts, as the holiday resorts, as the holiday resorts are completely, as the holiday resorts are a completely new market, a new market, a specific team in the form of the matrix structure, in the form of the matrix structure, will allow efficient implementation will allow efficient implementation of the project however the senior management however the senior management is not used to working in teams, therefore they may be dissatisfied, and may not be willing to work while some managers may feel motivated as they may get a chance to interact with new employees and their legacy will continue. Also
Also, a specific team focused on the holiday resorts may provide greater success, may provide greater success. ये दो हो गए, तीसरा एक और लेके आते। The case identifies, अगला पैराग्राफ, the case identifies the opening of the new hotel, was delayed due to the opening of the new hotel was delayed due to poor communication. So HH can focus on, decentralization by distributing authority as by doing so the decisions can be taken by the managers. The decisions can be taken by the managers and they may not have to wait for the board of directors, and they may not have to wait for the board of directors, full stop. The quicker decision making will enable HH to tackle the international competition and sustain its market share हमने 3 चेंजेस बोले, या तो एक मैट्रिक्स पे चले जाओ, एक ज्योग्राफिकल पे चले जाओ और एक डिसेंट्रलाइजेशन पे चले जाओ। आप डी लेयरिंग भी लिख सकते थे, आप प्रोडक्ट वाइज की बात भी कर सकते थे कि हॉलिडे रिजॉर्ट्स को अलग कर दो, होटल्स को अलग कर दो, लेकिन मैंने जो भी बात लिखी मैंने क्या करी, केस से लिंक करके जस्टिफाई करी। ऐसा करेंगे तो मार्क्स मिलेंगे।